Last time, friends, I have given up to question number 39 to you. Did you have all done? Did all of you have done? Is there any problem till 39 questions? Friends, is there any problem till question number 39? No, ma'am. All of you have done? Yes, Isha, what you have problem? In which question you have problem? Isha, in which question you have problem? वेरी गुड। अब सॉल्व करने आप लोगों ने समझ आ गया और सॉल्व नहीं किए। Going toward question number 40. In question number 40, you have given a function of f(x,y), x square, tan inverse y by x minus y squared, tan inverse xy, y. You will just only calculate its derivative here, fxy and fyx.
Okay, you will not put 0 0 in the terms. You just will have to calculate fxy and fyx. Okay. Come to the question number 40. Students, in question number 40, you have to prove that you will have to prove that f x y z. You have three independent variables here. You will prove this one will be equal to f, z, x and y. So firstly you will compute this one and then you will compute this one and then you will equate both of these. How to compute this one? Here is f, x, y, z means to say that you are taking here derivative of f, x, y with respect to z. You are taking derivative here with respect to z of x, y and z. Now I will explore this one. This one will be as it is, and how I will explore this one? Derivative of fx with respect to y. Now we will have to explore fx. How do we will explore f? Partial by partial z, partial by partial y, and partial f by partial x here. In the same line, students, you will have to do right hand side. How can I write here f z x y? I will explore here like that. You have f z x and y. You will have to calculate partial by partial y of f z x and partial by partial y of partial x by partial f by partial z. Is that clear, students? Now I hope so. You can compute. You can compute f, x, y, and z, w. If you have in three variables, three independent variables, you can calculate f, x, y, z, and w. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? किस चीज? अलाउंस लग गया, नोटिफिकेशन पड़ी तुम्हारी वहाँ। हाँ, अच्छा मैंने देख लो, हमारी 31/12/2020 है, जल्दी जमा कराने का फायदा हो गया। अच्छा चलो, अभी पढ़ के मुझे तो पता ही नहीं। ओए मेरा कैमरा ऑन हो गया गलती से। Okay, students, did you understand that how you will explore x, y, z and f, z, x, y? If you have any problem, then tell me. Otherwise, it's calculation. Students, I am asking, did you understand how I will explore x, f, x, y in three independent variables? In last lectures, I have teach you in in second order to explore partial derivative. Now I am going to tell you
how to calculate or explore in three orders. Did you understand? Students, cannot you unmute your mics? Are you listening me, students? Are you listening me? Students, are you listening me? Okay, Anam, did you all understand how to explore in third order? Okay, now we will have go towards its calculation. Are foreigners are present in class or not? Foreigners are present or not in class? Okay, students. Okay, students, I am going to calculate. I'm going towards calculation right now. Students, always remember that when you have question like that, when you have calculation like that, when you have to calculate derivatives like that, you will first take derivative of this one. I am repeating once again, listen once again, you will have to take derivative of this one with respect to this. And then you will have to take derivative of this one with respect to this. Now I am going towards its calculations. Okay, Dawood, I will give a chance and you can question on that time. I will unmute you at the end of meeting. Okay. Are CR present in the class? Is CR or GR? Please take screenshot of participants. You have question like that. F x raised to the power 3 plus 3yz and plus sine x, y and z. You will have to calculate here f x, y and z. So firstly, I will calculate here. So first of all, students, I will explore that formula. Then do anything else. First of all, explore the formula so that you may understand what derivative, what with respect to what you will have to take derivative firstly. So by exploring this formula, I have seen that I will take derivative of this one firstly. Then which result come, I will take derivative of that result with respect to y, and which comes, I will take derivative with respect to z. Firstly, I will take derivative with respect to x.
of this one function. So when I will take derivative of this one function with respect to x, here it comes 3x cube square, derivative of x cube 3x square. You will treat here x cube x as a variable and all the other variables will be constants. Y and z will be constant and all of 3 will be treated as constant. So derivative of this one will be equal to 0. And what will be the derivative of this one? Sine, derivative of sine is always equals to cos x, y and z. And what will be the derivative of x, y and z? You will always take derivative of angle when you are taking derivative of any trigonometric function. X, derivative of x, y, z will be equal to y and z. Okay, x will be treated as a variable, so derivative of x will be equal to 1. Now you have calculated partial f by partial x. Now what y will have to calculate? By observing this formula, I can see here. Now I will take derivative of upcoming result with respect to y. And what is the upcoming result? I have the result 3x here plus y z cos x y z. I will take its derivative with respect to y. Okay. When I will take derivative with respect to y, I will treat here x and z as a constant. So derivative of this one will be equal to 0 because I am treating here x as a constant. So derivative of this one and this one, how I can take its derivative? I will take student z as a constant. Firstly, I will apply constant times of the function and then take derivative of remaining term. So student z will take, I will take as a constant and all the other terms y and cos x, y, z I will apply here product tool. By using product tool, derivative of y is equals to 1 and cos x, y, z as it is. Okay. And plus y as it is. Derivative of cos x, y, z is equals to sine minus sine x, y and z. So what will be the derivative of x, y and z? X here, y is the variable and x and z are the constants. So derivative of x, y and z will be x and z. Derivative of y is equals to 1. So here is the result of this one. Now what will I have to do? I will again observe the formula which I have computed here. Now these calculations has to be completed. Now I will take derivative of these upcoming calculation with respect to z. With respect to z. So I will write here partial by partial z of this upcoming result. Z, I will multiply z towards throughout the bracket. Cos x, y, z minus y, z cos sine x, y, z. Okay.
Now I will have to calculate its upcoming results derivative with respect to z. How will I take derivative of this one function? I will use here product rule. Derivative of z is equals to 1 and derivative of cos xyz sine minus sine xyz and derivative of xyz xy. Okay. Now y will be treated as a constant y and x will also be treated as a constant. So I am taking here y and x separately using constant times of the function. So derivative of z is equals to 1. Derivative of z is equals to 1. And I will also take derivative of this one cos of I am using here product rule. Let's see once again. I have taken both the derivative in the same term. I will take it separately. Derivative of z is equals to 1 and cos x, y, z as it is. In the next, z will be as it is and derivative of cos x, y, z, sin x, y and z. Or derivative of x, y and z, x, y. Z will be treated as variable. Now I will take derivative of this one by using product rule. Here y and z will be treated as a constant. Y and x, sorry. Z will be variable. Derivative of z is equals to 1 and sine x, y, z as it is. Plus now z as it is and derivative of sine x, y cos x, y, z and derivative of x, y, z, x, y. Is that clear? That is f, x, y and z. Is that clear, students? Up to here, any problem? Students, here, any problem? No problem? Then you must have to calculate right hand side by yourself. I have calculated left hand side. Now calculate right hand side and observe. हाँ जी, क्या नहीं समझ आई पूछें. F, Z, X and Y. Now calculate this one. Now calculate for right hand side. स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को क्वेश्चन करना है तो अनम्यूट करके खुद को कर सकता है. और अगर नहीं करना तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो.
Students, if anybody have any question or any problem, you may ask. If you have no any problem, then do right hand side. Students, are you doing? CR present है क्लास में? CR प्रेजेंट हो? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोग को? मानूर, आपने ले ली अटेंडेंस? स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हो? एक दफा उर्दू में सुन लो अगर किसी को नहीं समझ आई। f(x, y, z) तो अगर ऐसे है स्टूडेंट तीन वेरिएबल में, तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है इसके रिस्पेक्ट से, जो सबसे आखिर में होगा उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे f(x, y), एकदम से इसको ना खोलें, इसको स्टेप बाय स्टेप खोलें, ठीक है। और फिर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको खोलें। क्वेश्चन करने से पहले सारा फार्मूला जो आपसे पूछा है उसको खोल लें और देन करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं फार्मूला खोलने के बाद पता लगा कि इसका डेरिवेटिव सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना है। जब पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करोगे वाई और जी कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर आया है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने के बाद जो आंसर आया है आखिर में उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है एफ जी एक्स वाई। तो इसका डेरिवेटिव, इसको कैसे अब एक्सप्लोर करना है, इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है। और अब इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन।
ठीक है। अब इस फार्मूले से खोलने के बाद आपको पता लगा कि सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर है उस सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और जो भी सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y at the end. When you are taking derivative with respect to z, you will treat x and y as a constant. And when you will have to take derivative with respect to x, you will treat here y at z as a constant. And when you will have to take derivative of y with respect to uh, uh, when you are taking derivative with respect to y, you will treat x and z as a constant. Is that clear, students? I have explored, I have calculated x, y, z. I have said that you must have to calculate this one term. I have explored that. Now calculate this one term. हाँ जी, कलसूम स्टेप वाइज खोलना है। जो सबसे आखिर में टर्म लिखी है ना, उस सबसे पहले जो दरमियान वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव आखिर वाली की रिस्पेक्ट लेना है। ठीक है, अगर आपने को 2 का खोलना आ गया तो 3 का भी खोलना आ जाएगा। उसके बाद एक और सवाल है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तो उसके भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी सीक्वेंस को फॉलो करें, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक दफा फिर सुन लो, जो आपके पास आखिर में टर्म है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है पहली दो का। ठीक है, और फिर जो 2 रह गई है नेक्स्ट फ्लोर रह गई, उसमें से जो आखिर वाली है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है पहले का। ठीक है, Kalsoom, is that clear? Okay, then now do right hand side. राइट हैंड साइड हो गई।
जी स्टूडेंट्स, did you all have done the question? Okay, that's very good, Saika. And what about all other students? Okay, very good, Kainat. Okay, students, I am going to explore question number 41, second part. Here are four independent variables. Here are four independent variables. Just focus on your screen and then you will have to tell me how I will explore it. Let's see here. I have students question like students, they said that show that f, x, y, z and w. I will have to calculate this one and I will have to show that this is equals to, ये क्या होगा? Students f, x, y, z and w. How I will explore it? So firstly, students, I will take derivative. I will take derivative of this one with respect to w. Okay. Now I will take derivative of this one with respect to z. Now I will take derivative of this one with respect to y. And at the end, I will explore the complete formula will be this is your complete formula. So firstly, you will have to calculate this one term, which comes, you will take its derivative with respect to y, which comes, you will have to take derivative with respect to z, and at the end, you will have to take derivative with respect to w. When you will have to take derivative with respect to w, you will treat x, y, and z as a constant. When you will have to take derivative with respect to z, you will treat w, x, y constant. And when you will have to take derivative with respect to y, you will take w, z and x as a constant. So स्टूडेंट्स एक दफा उर्दू में सुन लो. आई फील सो कि बच्चों को जरा समझ नहीं आ रही इंग्लिश में. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने जो टर्म है आखिर में, इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है इस पूरी टर्म का. तो जब आपने इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो पार्शियल बाय पार्शियल w आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू w डेरिवेटिव ऑफ दिस वन टर्म. ठीक है. फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू z. ठीक है. और जी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लोर हो गया. अब ये वाला एक्सप्लोर, इतना सा एक्सप्लोर करने वाला रह गया. अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और फिर आखिर में f ऑफ x को लेंगे.
तो जब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करना है, इस वाली टर्म को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करोगे, जो जवाब आया है उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर जो आंसर है उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, उसके बाद जो आंसर है उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ लो। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ओके महमूद, एंड डू इट्स कैलकुलेशन राइट नाउ। ये आपको प्रूफ करना नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर मतलब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल नहीं प्रूव करना, जस्ट आपने एक टर्म कैलकुलेट करनी है और उन्होंने कहा इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 2/x प्लस डब्ल्यू होल का क्यूब। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो उसको। अब बताओ क्या आंसर जाता है। क्वेश्चन भी हो गया बच्चों आप सबका? ओके, 42 से 45 तक करवाने जा रही हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको आना चाहिए इसको करने के लिए। स्टूडेंट्स हमेशा जो होता है ना dy बाय dx इक्वल होता है माइनस एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और एफ वाई क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल देखो। आपके पास है स्टूडेंट्स 42 क्वेश्चन कर रही हूँ, वाई स्क्वायर, यू हैव वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स raised to the power 4 is equals to 0. You will write all of these f x y e will equal to y square plus x square. Okay, now you will have to calculate a partial f by partial x. This will become 0 and x square derivative 2x y plus 4ax cube. Okay, now partial f by partial y, 2y plus x square plus 0. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दफ़ा उर्दू में सुन लो। हमने ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए
आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखना है। इसमें सबसे पहले तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट किया है, ये एफ एक्स, और फिर एफ वाई कैलकुलेट किया। अब ये जो दोनों कैलकुलेशंस आई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस अपकमिंग रिजल्ट इनटू this one formula. So what will become here? Minus sign of formula as it is, fx 2xy plus 4ax cube divided by fy 2y plus x cube. Is that clear, students? Let me see, I can it more simplify or not. स्टूडेंट्स, मैंने एफ एक्स और एफ वाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया जो कैलकुलेट किया था। तो देखते हैं अब इसका मजीद इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होती है कि नहीं। तो 2y प्लस, इसमें से देखें एक्स कॉमन आ रहा था। हियर आई विल टेक एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर आना है यहाँ पर, यहाँ पर। यस मैम, यस मैम, यहाँ पे सही है, ठीक है। तो जब ऊपर से कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, 2 भी तो कॉमन आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 4a एक्स स्क्वायर और नीचे 2y प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, इससे ज़्यादा मुझे सिंप्लीफाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? You must have to memorize this one formula for doing question number 42 to 45. You will have to calculate ordinary derivative dy by dx by using partial derivatives. This is the formula to calculate ordinary derivative by using partial derivatives. So students, your exercise 2.6 is complete now. 2.6 is complete now. Students, आगे करवाऊँ या आपने इसको complete करना है? मैम बहुत है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर मेरी एक शर्त है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसका टेस्ट भी दो, पूरी एक्सरसाइज का। ओके मैम। ठीक है मैम, हम दे देंगे। ओके मैम। चले ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीक फिर इसका टेस्ट भी होगा और आपने इसको कंप्लीट भी करनी है, ठीक है। तो अभी इसका टाइम है, क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ है, आप लोग इसको करो भी बैठ के 11:20 तक, ठीक है। जो नहीं आता मीटिंग ऑन है, उसे पूछ लो। तो सीआर किधर है? सीआर आया कि नहीं? नहीं है। महानूर आप हो ना जी यार? जी मैम। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस सेशन के। ठीक है मैम। 10 मिनट्स रिमेन टू ऑफ दिस सेशन। एक दफ़ा थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज देख लो। 10 मिनट्स में जो नहीं समझ आ रही वो मुझसे पूछ लो, ताकि आप लोगों को होमवर्क करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम लेनी है स्क्रीनशॉट्स। ओके।